Hi guys, gonna talk about Border 2, Hindustan, कहाँ तक आवाज जाएगी, लाहौर कहाँ तक आवाज जाएगी, जो सनी देओल का वो गन होती है वो ऐसा पहला पार्ट absolutely fantastic. This is dedication to our Hindu soldiers and absolutely I loved the first movie Border. Multi-star are absolutely fantastic. This is going to be even the into the second part भी superb होने वाला है. What happened to first movie, guys? Had Jackie Shroff, many others, Akshay Khanna, Sunny Paji. Sunny Paji comes in the film. He just makes me so proud and happy. That's why I like Sunny Deol as an action hero. Why he set the legacy with this Jat, with this character, and he's back with a bang with that gun जो उसके शोल्डर में होता है वो चलाता है वो that kind of उसका speciality है सनी पाजी के लिए. Absolutely fantastic, absolutely brilliant. You have Han Shetty will be seen. His father was seen in the first film, guys. Sunny Shetty, the legend, my favorite. Sunny Deol as well. Akshay Khanna was in the first movie. And you have Diljit Dosanjh, my favorite singers of all time. And you have Varun Dhawan. I hope Varun Dhawan gets a better role in this film, better screen time. And for Han Shetty as well, which I enjoyed his first film, Tarap. कहाँ तक आवाज जाओगी, सनी डियोल सेज कहाँ तक आवाज जाओगी अपने अंदाज से लाहौर तक. एंड दिस इज अबाउट 1971 इंडो पाकिस्तानी वॉर जो हो. दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्लॉट. या दिस जो फाइट्स होती है, जो वॉर का सीन फिल्म में दिखाते हैं टीजर में. द सनी डियोल दुश्मन को कैसे मारता है. एवरी कैरेक्टर looks promising, absolutely promising. This is going to be a huge film of 2026. Republic Day ये फिल्म आने वाली है जनवरी को. This is going to be a huge successful film in my opinion. अभी इसका टीजर आएगा, फिर इसका गाने आने वाले, फिर इसके ट्रेलर आएगा. We will find out the film. Absolutely fantastic. You have Mona Singh in this. You have Sonam Bajwal will be seen in the film. You have many other characters as well, and Han Shetty looking very promising. Varun Dhawan as well, Diljit Dosanjh and Sunny Deol's and that missile gun जो उसके shoulder में होता है, बाजू में वैसा fire करता है धमाके की तरह. Sunny Deol has my favorite. I love Sunny Deol. I am a huge fan of Sunny Deol. I love Sunny Deol. Whenever he comes in a film like Gadar 2, for example, Gadar 1, for example, Border 1, absolutely brilliant. Sunny Deol is my favorite. I love Sunny Deol. He's best ever in this film. ये सनी देओल ये बॉक्स ऑफिस पर ये फिर से बाजी मारेगा, फिर से ये सक्सेसफुल ये पिक्चर होने वाली है मेरे मुताबिक. ये फिल्म लंबी रेस का घोड़ा, ये फिल्म धमाकेदार होने वाली है. एब्सोल्युटली द फाइट सीन्स, द वीएफएक्स दिस शोज, जो फाइट सीन्स होते हैं एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जो क्या कहते हैं उसको, मारदार जो भी कहते हैं इसको, क्या है उसका, रॉकेट की तरह ऐसा बम, ऐसा बॉम्ब्स, ऐसे जो भी इस फिल्म में टीजर में दिखाया एकदम बढ़िया. आई एंजॉयड, आई लाइक्ड. इन माय ओपिनियन कब कहाँ तक आवाज़ जाएगी, सनी देओल्स पावरफुल वॉइस एंड टोन, कहाँ तक आवाज़ जाएगी. बोलते हैं लाहौर तक. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड फिर बीजीएम प्ले होता है हिंदुस्तान का गाना. एब्सोल्युटली ग्रैंड सल्यूट टू आवर इंडियन सोल्जर्स who sacrificed their life in wars. And the first was very emotional, plus the songs were superb. संदेशे आते हैं, ये जाते ये लम्हे, रूप कुमार राठौर ने उस बंदे ने गाना गाया. सुपर हिट फिल्म सॉन्ग it was. संदेशे आते has to be my favorite. Emotional film थी. Absolutely everything. The border, Jackie Shroff was in the film.
First movie was absolutely brilliant. This is called a picture. Picture born nahi hai to ye border has to be border for me. I have grown up watching border. I loved border. उसके एक्टर्स सिद्धेश बैरी उसमें था, सभी उस पुनीत उसर पुनीत उसर उसर उसमें उसमें था फर्स्ट मूवी में। कुलभूषण कुलबंदा भी उस फिल्म में था, सभी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी पहले पार्ट में। सनी शेट्टी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। या दिस इज गोइंग बी अ नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉर्डर। And Dior Sunny Party is back with a Dhamaka after he did with Gadar 1 and Gadar 2 Dhamaka. Absolutely, Sunny Deol, I have huge respect and huge love for the actor. One of my favorite action heroes in Bollywood. कहाँ तक आवाज़ जाएगी, लाहौर तक जाएगी। Absolutely fantastic. The dialogue delivery, JB Datta film. This is and is a legacy. This franchise is going to be huge legacy, and I hope Warren Doman gets it right because his films are not clicking. I feel bad for him, but I want Warren Doman to become a comeback. इसका धमाकेदार होना चाहिए उसका कैरेक्टर फिल्म में. So let's hope. अभी तो ट्रेलर टीजर है, अभी ट्रेलर आएगा, फिर उसके गाने आएंगे. Absolutely love the teaser. This is our true Hindustan national heroes. This is all the heroes who sacrifice their life and who go in the war. It's not easy. It's not easy. Absolutely loved the teaser. Border 2 ka teaser. 4 out of 5. Absolutely fantastic. Sunny Deol, I would give 100 out of 100. He's a legend. Sunny Paji is the best. Best person in the planet, best actor of mine. Dharamji was a huge favorite of mine. I loved Dharamji as well, the real He-Man. And Sunny Deol will create this legacy again, like it did in the 90s. पहली बॉर्डर के साथ ये भी इससे ऊंचा धमाकेदार फिल्म होगी. आई एम टेलिंग यू, ये मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जैसा पहला पार्ट था, ये सेकंड पार्ट भी धमाकेदार होगी. Because good to see Ahan Shetty after he was in Tarap. What a brilliant performance he was in that, in Tarap in 2021. So this is going to be his second film. So he's looking promising. Varun Dhawan as well and Diljit Dosanjh as well. सबने अच्छे लग रहे हैं टीजर में, उसके कैरेक्टर में. They're playing fantastic. They're looking fantastic. Especially Sunny Paji is the raw. He's the main thing you want to watch on the film, on the big screen. ये धर्म दी का बेटा धर्म जी, my favorite of all time, legend. And Sunny Deol is another legend. I respect him, I salute him, I love Sunny Deol. He's a fighter. He's a real superstar action. Bollywood, best superstars in Bollywood. Old is gold. Old is gold. So absolutely love the teaser. Absolute धमाकेदार वॉर का सीक्वेंस, जो बम फेंक रहे हैं, वो जो एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, सनी देओल को दुश्मन को कैसा मारता है, एंड वो मिसाइल गन होती है उसके हाथ, उसके बाजू में, उसके शोल्डर पर ऐसा चलाता है. फिर एब्सोल्युटली इज अ डिलाइट, इज अ डिलाइट टू सी सनी पाजी back in his character. Brilliant, absolutely brilliant. ये धमाकेदार फिल्म होने वाली. रिपब्लिक डे इज गोइंग टू बी नेशनल हॉलीडे ऑफ इंडिया, एंड ये फिल्म तो धमाकेदार बिजनेस करेगी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. सो 4 out of 5 फॉर दिस टीजर. ब्रिलियंट टीजर. अभी ट्रेलर आएगा, फिर ट्रेलर हम टॉक करेंगे इसके बारे में, डिटेल के बारे में. एंड इसके गाने अभी आएंगे गाने में. So looking forward to this massive film. I might go to watch this film in the theaters on the big screen. Yeah. So this is going to be my favorite. This is going to be my awaited films of 2026. So ये बढ़िया फिल्म होने वाली है Border 2. So I give the teaser grand salute, 4 out of 5. Absolutely fantastic. Sunny Paji is back with a bang once again after Gadar 2 का धमाकेदार blockbuster. This is going to be another tsunami blockbuster होगी है because of Sunny Deol and other characters as well. Brilliant,
Absolutely brilliant. So there you go. That was Border 2 teaser review. So yeah, there you go. It's a true winner. It's a true winner, and for the dedication to our Indian soldiers, our Indian army people who sacrifice their life and go into war, and Hindustan will always remain, will win. So yeah, absolutely fantastic. So 4 out of 5. So there you go. Loved it. Love Sunny Deol, and I will keep loving Sunny Paji. Love you, Sunny Deol. Keep it up. Always been a fan of yours since the 90s time. Brilliant you are. Thumbs up. Absolutely thumbs up to Sunny Deol from my side. So there you go. 4 out of 5 for Border 2 teaser. So I will see you in the next one. Bye.